सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाजा धिया वा भजति पद जनक्षुद्रदैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्ये निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयाम। सत्वं यत्तत् पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावद्भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुश श्रूयते व्यासवाक्यं। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादि परसुखजित्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्यारमन्दे श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्भे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगदमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्माकस्मान्नो निष्कळस्त्वं सकल इति वजस्त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत् क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवागुण्ठ वैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिशङ्गलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्तोहमन्दसिञ्चत् सञ्चितगानां वपुरनुकलये मारुदागारनाथ। कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुतरभवखेदावहा जीवभाजामित्येवं पूर्वमालोचितमजित मया नैव मद्याभिजाने। नो चेज्जीवा कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन्। नम्राणां सन्निधत्से सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडीद्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम्। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषादैश्वर्याधीशतेऽन्य जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं। त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे
चेतनास्फीतभाग्यास्त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते। ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि।